Dear students, today we will study a poem from class 7, Honeycomb. The name of the poem is The Squirrel. It is written by Mildred Bowers Armstrong. So, you might have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. You might have seen a squirrel on the trees near your garden. You might have seen it anywhere, and you might have enjoyed its shape. Here is the poet's description of just such a squirrel. So come to the poem. We will study this poem. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree, he went the other way. Dear students, in this poem, the poet describes how the squirrel covered in grey fur sits in an upright position on a tree branch eating a nut. इस कविता में पोएट डिस्क्राइब करते हैं एक स्क्विरल के बारे में जो ग्रे फर से कवर्ड है और वो बिल्कुल सीधे पोजीशन में बैठकर एक पेड़ के ब्रांच पे वो नट खाता है, बादाम खाता है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो वो खाता है. His tail looks like a question mark because of its bent shape. चूँकि उसके पूँछ जो है वो टेढ़ी होती है, you might notice here, and since it is bent, it seems like a question mark. The poet tells us about the nature of the squirrel, that it is innocently naughty. This is naughty, ये naughty तो होता है लेकिन innocent होता है, and likes to tease anyone who comes near him. और जो भी उसके पास आता है उसको वो tease करता है. So dear students, the poet sees a squirrel and the squirrel is sitting on a tree and eating nuts. You may see the squirrel is enjoying nuts. वो nuts खा रहा है and its tail is raised upwards. इसका tail जो है वो ऊपर की ओर उठा हुआ है, ऊपर की ओर उठा हुआ है. Thus the tail seems to be making a question mark. इसलिए ऐसा फील होता है कि उसका टेल जो है एक क्वेश्चन मार्क बना रहा है. It had a grey coat. See, the fur is on its body and it is so long, that is so loose that the poet calls it an overcoat. वो इतना ढीला ढाला होता है कि पोएट जो है इसको ओवरकोट से तुलना करता है. In order to eat a nut, नट खाने के लिए, it is sitting straight. See, it is sitting on its hind legs and using its front leg to eat the nuts. A squirrel is very funny animal. It likes to play with human beings. If human beings run around his tree, अगर कोई आदमी इसके पेड़ के आसपास चारों ओर घूमता है, the squirrel won't be frightened. तो स्क्विरल जो है वो डरता नहीं है, बल्कि
It would like to tease and play the human being. See what the poet has written. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. So, it would like to tease and play with human being. वो उसको चिढ़ाता है, उसके साथ खेलता है. To do so, ऐसा करने के लिए, it would run round the tree. But from the opposite side, he went the other way. He stands for here squirrel. और जब आप घूमते हैं इसके पेड़ के चारों ओर, तो ये जो है दूसरी ओर से घूमता है. जिस तरफ से आप घूमते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन से ये पेड़ के चारों ओर घूमता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पोएम Squirrel written by Mildred Boer Armstrong. Dear students, if you have not subscribed the channel till now, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो रिलीज़ होने के बाद आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी. और सब्सक्राइब करने के बाद लाल बेल का जो बटन है उसको दबाना न भूलें. तो आइए अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं. और सबसे पहला क्वेश्चन जो टेक्सुअल क्वेश्चन था, वर्किंग विथ द पोएम. Why does the poet say the squirrel wore ? for tail? Draw a squirrel or find a picture of a squirrel sitting on the ground. How do you describe its tail? So, the answer is, the poet says that the squirrel wore a ? for its tail. This is because the shape of the squirrel's tail looks like a ? चूँकि उसके पूँछ का शेप जो है वो एक क्वेश्चन मार्क से मेल खाता है, इसीलिए जो है पोएट ने स्क्विरल के लिए ये लिखा है कि स्क्विरल वोर ए ? फॉर इट्स टेल. कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स ए टेल? व्हाट डू वी से? Think, does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in different ways. The answer is given here. Usually it is said that an animal has a tail. The poet has used wore in the poem in order to create an image of what he had seen. This is an example of imagery. So usually बच्चों हम लोग लिखते हैं कि an animal has a tail, लेकिन पोएट ने वोर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो एक इमेज क्रिएट करना चाहता है, एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता है जो कुछ उसने देखा है. तो इट इज़ कॉल्ड इन लिटरेचर एन इमेगरी. इसको जो है लिटरेचर में इमेगरी कहते हैं, जिससे इमेज क्रिएट होता है. नीचे 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं. एज यूज ऑफ वर्ड वियर in different situations. A. Your friend wore a coat. B. Our principal wears a happy smile. C. Sohan wears long hair. You can consult a dictionary and get more usage of the word wear in different situations, in different conditions. आप डिक्शनरी में ये पता कर सकते हैं कि द वियर वर्ड का और भी कितने प्रकार से यूज हो सकता है. Now come to the third and last question. He liked to tease and play. Who is
teasing whom? How? तीसरा जो प्रश्न है वो पूछता है कि he like to tease and play, but who is teasing whom? कौन किसको टीज कर रहा है? The squirrel is teasing the poet and his friends. When they ran around its tree, the squirrel went the other way. इस पोएम में स्क्विरल जो है वो पोएट और उसके फ्रेंड को टीज करता है। जब पोएट और उसके फ्रेंड उसके पेड़ के आसपास होते हैं तो स्क्विरल जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। So once again, thank you for watching this